So good morning, good afternoon and greetings of the day to all the students. I hope you liked our series for class 6th mathematics, and soon we'll be completing class 6th mathematics and we'll be starting class 6 science, and after that consecutively we'll follow the same fashion for class 7th, class 8th, so on till class 10th. Okay, so till now we have discussed class 6 chapter 5 and we have discussed all the concepts, all the examples and all the questions in our previous videos. In case you have not watched our previous video, the link is in the description or you can find the videos in our playlist. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट हैव वी डिस्कस्ड और दी summary of the chapter. We do it for two reasons. The first is to summarize the whole chapter, and the other reason is that in case we have missed any point, we can cover in that in summary. चलो, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि हमने कोई point miss किया हो, लेकिन तब भी we have this paratha and we have this tradition. चलो, so point number 1, the distance between endpoints of a line segment is called its length. Absolutely, इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट आर ऑफ measurable length. However, a line can be extended indefinitely on both the sides and the ray can be extended indefinitely on one side. However, line segments are of fixed length and they can be measured. That is totally a point of common sense. Okay, so point number 2, a graduated ruler and a divider are useful to compare lengths of line segments. Okay, so the methods of comparing length were 3. The first, second and third, that is observation, tracing and ruler and divider, in which the most accurate is divider, and after that it is ruler, and after that it is tracing, and after that is observation. ये क्या क्या होते हैं? We have studied that in the first part of this chapter 5. Please watch in case you have not watched it. Okay, so part 3, point 3. When a hand of clock moves from one position to another, we have an example for an angle. Obviously, we studied with the help of unitary method that how one full revolution is divided into 12 divisions, and 12 divisions are divided into 60 minutes or 360 degrees. And we understood how to use the unitary method, and we understood that each division represents how many degrees, and that is 30 degrees. चलो, तो अब इसमें क्या है? वन फुल टर्न ऑफ अ हैंड इज वन रेवोल्यूशन, बिल्कुल. राइट एंगल इज 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, मतलब कि आपका एक क्वाड्रेंट, मतलब 12 से लेके 3, 3 से लेके 6, 6 से लेके 9, 9 से लेके 12, या फिर नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके साउथ, साउथ से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके नॉर्थ. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर वे, या तो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की एनालॉजी ले लो या फिर आप एक क्लॉक की एनालॉजी ले लो. ठीक है, we use protractor to measure the size of the angles. That also we studied how to use a protractor, how can we measure the angles from both the sides of the protractor, and what are the two essential points to be remembered while measuring angles using a protractor. The measure of a right angle is 90 degree. That also we understood under the classification of angles, that there are classification of angles, and we studied that how many types of triangles are there. In that also we studied. जो मतलब सब कुछ मस्त है. और क्या था? acute angle, right angle triangle, reflex, obtuse angle, straight angle, reflex angle and a complete angle. ठीक है, straight angle is 180 degree and angle is acute के बारे में भी हमने पढ़ा, obtuse के बारे में भी हमने पढ़ा, तो सारी चीजें पढ़ी, रिफ्लेक्स भी पढ़ा. चलो, तो ये चीजें आप लोग पीछे जाके पढ़ लीजिएगा. इन केस यू हैव नॉट स्टडीड इट, डू नॉट थिंक दैट आई विल बी गिविंग यू अ वेरी शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक जो है वो शॉर्ट ट्रिक ही रहती है, कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता. तो फोकस ऑन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड अल्टीमेटली यू विल बी अ ब्राइटर स्टूडेंट. Point number 4, two intersecting lines are perpendicular if the angle between them is 90 degree. That is understood. And the symbol for representing a perpendicular line, a pair of perpendicular line is this. Okay. The perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to the line segment that divides it into two equal parts. मतलब क्या हुआ?
हमने दो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है एनी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे that divides a line segment into two equal parts. However, the word perpendicular means that any line, line segment or ray which when intersected, which when intersects or crosses a line segment is making 90 degree with that line or line segment or ray. Sure. Triangles can be classified on basis of their angles. Triangles can be classified on the basis of the type of sides. Angles के हिसाब से बनते हैं acute, right और obtuse, और sides के हिसाब से बनते हैं scalene, isosceles and equilateral triangle. ठीक है, तो ये चीजें भी हमने पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी कि एक्यूट एंगल जो है वो इस तरह का होता है और किस तरह से एक एक्यूट एंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बन सकता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह का भी हो सकता है, और एक ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो भी आइसोसेलेस हो सकता है, और स्केलिन क्या होता है जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, है ना, और स्केलिन जो है वो आपका रिफ्लेक्स भी हो सकता है और वो आपका एक्यूट भी हो सकता है, मतलब all the three can be combined with the other three as per your combination types. Okay. इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो स्पेशल केस था इसका, एक्यूट एंगल का। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स जो इक्विलेटरल में 60 डिग्रीज हो जाते हैं along with all the three sides being equal to each other. ठीक है, तो ये अच्छी मतलब एक स्पेशल ट्राइंगल था जिसमें कि मतलब आपका ट्राइंगल का साइड के साथ साथ एंगल का भी एक रिलेशन बन रहा हो, एंड वी आल्सो स्टडीड दैट हाउ इफ टू साइड्स आर इक्वल द एंगल्स ऑपोजिट टू दैट दोस कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब हम आ जाते हैं पॉलीगॉन पे और क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा, क्या पढ़ा, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इसमें एक एक साइड प्रॉपर्टी दे रखी है, वी हैव स्टडीड इट इन डिटेल हर प्रॉपर्टी। पॉलीगॉन में क्या है, ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, number of line segments. So with this we conclude the summary and we see that we have covered all the concepts and all the questions in detail. So I hope you understood and you enjoyed our content. So till the next time we meet, goodbye.